Very cheerful good morning to all of you. Welcome to the English class. Yes, student, today we are going to discuss the grammar part of the lesson number 2. The name of this lesson is Crusoe Friend. So student, let's start this grammar part. Yes, so first is here comprehension. So comprehension, yes, students, yes, everybody take out your book and open the page number 22. Yes, in the first exercise, complete these sentences with words from the story. Okay, हमको जो sentence है, जो story में जो दिए गए हैं, उसको complete करना है. Number 1 is here, Friday picked out a good tree and dash, and in about a month that the boat was ready. So here we complete the sentence. Friday ने एक अच्छा ट्री लिया और एक ही मंथ में the boat was ready, और एक ही मंथ में उन्होंने बोट तैयार कर ली. Now second one is here, Crusoe had saved. Crusoe ने किसको सेव किया? Yes, Crusoe had saved Friday's life. Clear? Now third one, it took 2 months for Crusoe to dash. It took 2 months for Crusoe to get the mast and sail ready. You know that the mast is the wooden or metal pole for a flag, जिसके flag के लिए जो wooden और metal pole होता है. So here we use as a word as a mast and sail ready. Number 4 is here, Crusoe made the rudder and dash. The Crusoe made the rudder. Yes, you know the rudder in Hindi we can say as a patwar, which means a piece of wood or metal that is used for controlling the direction of a boat. जब हम जो बोट की जब हम सेल करते हैं, यात्रा करते हैं, जर्नी करते हैं सी पर, तब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक रूडर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं. So here we use as a word as a rudder. So here students, so Crusoe made the rudder and fastened it to the stern of the vessel. Stern of the vessel means back end of the boat. और उसने जल्दी से ही जो बोट का जो बैक एंड था और rudder को तैयार किया. Now Crusoe taught Friday how to use the rudder and dash. So Crusoe ने Friday को क्या सिखाया कि how to use the rudder, rudder को कैसे यूज करेंगे, and he became a good sailor. तो वो कौन बन गया, sailor बन गया. कौन बन गया? Friday became a good sailor. Clear student? Number 6 is here, Friday covered the boat with dash bough of tree. Friday ने बोट को किससे कवर किया? With bough of tree. Yes, bough means large, you can say as a thick branches. जो पेड़ की जो बड़ी मोटी शाखाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? bough of trees. तो उससे जो bough of tree से Friday ने बोट को कवर कर दिया. Okay student, so now let's start the next activity. Fill in the table below with information from the story to show what the two friends did for each other. अब हमको ये बताना है स्टोरी में से कि दोनों फ्रेंड्स ने एक दूसरे के लिए क्या किया. So table is given here. So you have to write so things the Crusoe did for Friday, and you have to write the things Friday did for Crusoe. अब आपको ये लिखना है कि Crusoe ने Friday के लिए क्या किया और Friday ने Crusoe के लिए क्या किया. We have already discussed in the previous class. Yes, here you notice that number 1 is here, save Friday life. Yes, Crusoe saved Friday life and took him to his cave. Crusoe Friday की लाइफ को सेव किया और अपने केव में ले गया. Number 2 is here, feed him and gave him clothes to wear. Yes, Crusoe feed him. Crusoe ने Friday को कुछ खाने के लिए दिया and gave him clothes to wear, और उसको पहनने के लिए कपड़े दिए. Now next is and the Crusoe taught him to milk goats and make butter and cheese. Crusoe ने बताया, सिखाया उसको कि जो गोट है उसका मिल्क कैसे निकालते हैं and उससे बटर और चीज कैसे बनाते हैं. So this thing so Crusoe did for Friday. Crusoe ने ये Friday के लिए किया. Now next thing is here, the Friday did for Crusoe. Friday ने Crusoe के लिए क्या किया? So let's start. Yes, Friday helped pick a good tree to make a boat. तो Friday ने बड़ा ट्री उठाने में, अच्छा जो बड़ा ट्री उठाने में उसकी सहायता करी and to make a boat, और बोट बनाई. Second is the shape the mast of the boat. तो जो Friday था उसने जो बोट की जो मास्ट थी उसको शेप किया.
Number third is here, curved the boat to protect it from the rain. अपनी जो बोट थी उसको क्या करा, जो रेन से प्रोटेक्शन देने के लिए उसको कवर्ड किया। जैसे अभी हमने स्टडी किया था कि बाउस ऑफ ट्री से अपनी जो क्रूसो कवर्ड द बोट विद बाउस ऑफ ट्रीज, जस्ट लाइक दैट द क्रूसो डिड फॉर फ्राइडे डिड फॉर क्रूसो, फ्राइडे ने क्रूसो के लिए किया था। सो दिस द टेबल, सो हियर you know very well that these things Crusoe did for Friday, and the things here given as the things Friday did for Crusoe. Okay, now let's start the word with words. हमको start करना है activity E, match these words with their synonyms. अब हमको match करने हैं synonyms उसके words में। तो yes, let's start the matchup, student. So first of all you have to know about the synonyms. Synonyms जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। Synonyms are words that are similar to another word or have a related meaning. जो synonyms होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो words होते हैं जो क्या होते हैं, दूसरे word के similar होते हैं and have related meaning, और उसी के according, उसी से related क्या होता है, meaning होता है। तो same meaning होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, synonyms. Now let's start. Number one is your study. Yes, you know study. Yes, match the study. Yes, synonyms of study is here tough. Okay. Second is here peace, means shanti. Yes, match up to calm. Okay. So here first, second peace match to D, calm. Calm means also shanti. Okay. Number third is here faithful. The synonyms of faithful will be loyal. Okay. हमको पता है faithful means क्या होता है, वफादार. Okay. Number fourth is here grateful. The synonyms will be grateful is here as a thankful. Okay. Now number fifth is here voyage. Voyage, here the synonyms will be voyage, as here we use as a word here as a journey. Number six is extraordinary. Yes, you know extraordinary, असाधारण, rare जिसको हम बोलते हैं. Yes, we match from the C, remarkable. The synonyms will be extraordinary as a remarkable. So this is a match these words with their synonyms. So you have to learn these synonyms also. Okay. Now, yes, move on the next page. Yes, here are some phrasal verbs with the words take, read their meaning. Yes, let's start, student. यहाँ पर phrasal verb दिए गए हैं, अब हमको उनका मीन देखना है। phrasal verb कौन सा दिया गया हुआ है, take का. So let's start the phrasal verb. What is a phrasal verb, student? Yes, phrasal verbs are the verb that more than one word. Yes, normally the verb followed by preposition or an adverb. हम phrasal verb की बात कर रहे हैं जो एक या दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसके साथ हम verb के साथ as a preposition या adverb use करते हैं. So here you can see that the take up, take out, take in, take after, back, take back, and take off. So there are the different meaning of the take up, take after. Okay, let's start. Number one is here take up. Take up means to start a new activity. Take up means क्या होता है कि कोई भी नई activity start करते हैं तो हम use करते हैं as a phrasal verb take up. Second is here to take something out of a pocket or bag. Yes, take out means क्या है कि to take something out, किसी भी चीज को बाहर निकालना of a pocket or bag, या bag से या pocket से या कोई भी चीज बाहर निकालना. So here we use as a phrasal verb take out. Next is here take in. Take in, which means to prove someone a place in one's home. So to provide, हमको किसी के घर में क्या होता है, one's home, किसी के घर, मतलब किसी के घर हम बात करें, to provide someone a place, तो किसी को place provide करवाना, उसको क्या बोलते हैं हम, take in. Now next is here take after. Yes, take after means to be similar to a family member in looks or habits. Take after क्या होता है कि हमको अपनी family member के similar ही किसी को देखना और उसकी habit, जो family member है उसी की आदत होती है. तो here we use as a phrasal verb take after. Next one is here take back.
Take back means to admit that something you said was wrong. आप ये admit कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि जो तुमने कहा है वो wrong है. So here we use as a phrasal verb take back. Next is here take off. Take off means to remove something that you are wearing. मतलब आपने कुछ पहन रखा है, आपने वो उतारना है, as a shoes उतारे आपने, as a shirt उतारे. तो here we use as a word take off. Clear, student? So these are the phrasal verb of take. Now let's start the exercise. Fill in the blanks with the correct phrasal verbs. You may need to change the tense in some sentences. अब हम देखेंगे कि यहाँ पर फिलअप्स दे रखे हैं, हमको करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स यूज करनी है. सो यू मे नीड टू चेंज द टेंस इन सम सेंटेंसेस. तो इसके अंदर हमको कुछ टेंसेस में चेंज भी करना चाहता है. अगर हमको चेंज करना होगा पास्ट में तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, टेक की जगह हम टुक यूज कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, Mrs. Sen took the dance little puppy in and gave him shelter from the storm. So here we use as a not take, we use as a according to a tense, we use second form as a took in. Clear, student? Took in means क्या होता है? Provide someone a place in one's home. तो Mr. Sen drenched little puppy in one and gave him shelter from the storm. उसको storm से shelter शरण देने के लिए उसको little puppy को क्या कर लिया? अपने घर रख दिया. Now, second is there, doctor advised my father dash jogging. तो डॉक्टर ने मेरे फादर को एडवाइस दिया जॉगिंग करने के लिए. So here we use as a suitable phrasal verb take up. Take up means to start a new activity. कि आपको जो कोई भी take up jogging as a new activity आपको क्या करनी है? Start करनी है. So here we use phrasal verb take up. Number 3 is here, please dash your shoes before you enter the room. अब हम बोल रहे हैं कि जब आप रूम में एंटर करें तो अपने शूज को उतार दें. तो हियर सुटेबल फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ. टेक ऑफ मींस टू रिमूव समथिंग दैट यू आर वियरिंग. इसका मतलब कि आपने जो कुछ पहन रखा है, आपने जैसे अपने शूज हैं, अगर रूम में एंटर होना चाहते हैं तो अपने शूज उतार दीजिए, which means to remove something that you are wearing. Number 4, my sister dash my father. They both have a great sense of humor. Here we use phrasal verb takes after my father. My sister takes after my father. Why we use as a phrasal verb takes after? Because take after means to be similar to a family member in looks or habit. हम देखते हैं कि हमारा जो फैमिली मेंबर उसी की तरह लगता है, उसी की तरह दिखता है, उसकी आदतें भी वैसी हैं. तो here with the suitable phrasal verb is here we use take after my father. They both have, दोनों का ही similar है, क्या है? Great sense of humor. Number 5, the teacher asked the children to dash their notebooks. The teacher ने बच्चों को कहा कि yes, take out their notebooks. Take out means yes, to take something out from the bag. अपने बैग से अपनी notebooks निकाले. So here we use as a phrasal verb take out. Now next is here, I dash my words because I was wrong. मैं अपने शब्द, अपने जो वर्ड्स हैं वापस लेता हूं क्योंकि मैं गलत था. So here suitable phrasal verb we use as a take back. Take back means to admit that something you said was wrong. आपने admit किया है कि जो मैंने बोला है कि मैंने गलत बोला है. So here I am take back my words because I was wrong. क्योंकि मैं गलत था. Okay, students. So this is your activity F. So here you have to use as a phrasal verb in fill-ups form. So firstly you have to remember the phrasal verb take out, take up, take after, take back, take off. So after that you have to fulfill the fill-ups. Now next is here spell well. Now number 1 is here as fill in the blanks with or er to make new word. हमको or er use करना है तो नया word बनाने के लिए. Yes, number 1 is here sailor, SAILOR. So here we use as a verb as a letter OR. Next is here reader, RE read, reader. Visit, so new word बन जाएगा आपका OR join करके visitor. Number 4 edit. So here we use letter OR to become a letter, become a word editor. Number 5 is here caterer. So here we use as a letter ER. So here we use as a caterer. Number 6 is here teach, teach become a word teacher. So here we add ER. So word become teacher. Okay. Now let's start look it up. Yes, look
up these words in a dictionary to find out their meanings and make sentences with these words. अब आपको क्या करना है कि आपको डिक्शनरी से वर्ड फाइंड आउट करने हैं और आपको सेंटेंसेस बनाने हैं इस वर्ड से. So student, this activity for you, you have to find out their meaning. Yes, I already told in previous class as the anniversary, terrified, faithful, and rescue. So yes, student, you have to find out this meaning and make sentences from this words. In the next class, you will tell me that the sentences and you will tell me that the means of these words. Okay, student? Now, let's start the activity. Next, new grammar. Yes, it is very important from you. This is this topic is related to a grammar question. It is very important important topic. So read this sentence. Crusoe was milking the goat when Friday woke up. Yes, student, read these lines. Who was milking the goat when Friday wake up? हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में. क्रूसो क्या कर रहा है? क्रूसो जो है वो गोट से निकाल रहा है. एंड व्हेन फ्राइडे वोक अप, जब फ्राइडे जागा. तो अब हम बात कर रहे हैं कि हु वाज मिल्किंग द गोट व्हेन फ्राइडे वोक अप. जब फ्राइडे उठा तो गोट से दूध कौन निकाल रहा था? आंसर इज हियर क्रूसो. Yes, the Crusoe, this part tell us who or what the sentence is about. Crusoe हमको ये बता रहा है कि sentence किसके बारे में है, किसके बारे में बात चल रही है. Yes, this is the subject. Crusoe के बारे में बात चल रही है तो Crusoe is here as a subject. So in this grammar portion, I'm talking about subject and predicate. So what is subject and what is predicate? So I'm explaining you next sentence. What does the sentence say about Crusoe? अब क्रूसो के बारे में बात चल रही है कि क्रूसो ने what sentence say about क्रूसो. क्रूसो के बारे में क्या कह रहा है सेंटेंस? क्रूसो was milking the goats when Friday woke up. अब देखिए जो हमारा जो ये पार्ट ब्लू वर्ड्स में है, was milking the goats when Friday woke up. So this part tell us something about क्रूसो. ये पार्ट किसके बारे में बता रहा है? क्रूसो के बारे में बता रहा है. Yes, this is the predicate. ये हमको क्या बताता है? ये पार्ट कौन सा है हमारा? Predicate. Yes, you can notice that subject is here, predicate is here. Yes, every sentence has subject and predicate. Every sentence has two part, subject and predicate. प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. तो सब्जेक्ट in this sentence, subject is here, Crusoe. Crusoe, when we talk about as it is a part of a sentence that tell us who or what the sentence is about. Subject is here. जब हम बात करते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है वो कहलाता है हमारा सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है. Yes, this is the part of a sentence that tells us what the subject does. सब्जेक्ट क्या कर रहा है? And is or has, उसके पास क्या है. So here we use as a predicate part. Okay, I'm explaining you from this slide. Yes, subject is who or what the sentence is about. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हमको पता है कि ये कौन और क्या है सब्जेक्ट. Now second is predicate. Predicate tells what the subject does. Predicate बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. Now let's take an example. A big green frog jumped across the log. Okay, so here subject is here. Who jumped across the log? किसने jump किया across the log? किसने jump किया? Yes, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Big green frog के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो subject is here are green बिग ग्रीन फ्रॉग. फ्रॉग क्या है यहाँ पे हमारा? देखिए एज अ सब्जेक्ट है. हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि फ्रॉग के बारे में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या है? फ्रॉग. नाउ प्रेडिकेट पार्ट क्या है कि प्रेडिकेट हमको बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. तो अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू. तो बिग ग्रीन फ्रॉग जम्प्ड अक्रॉस द लॉग. अब जो फ्रॉग है वो क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गया कि फ्रॉग है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है? वही हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है. देखिए जो फ्रॉग है क्या कर रहा है? जम्प्ड अक्रॉस द लॉग. तो वो जंप कर रहा है. जो जंप वाला काम है, जो अक्रॉस द लॉग, ये हमारा जो पार्ट है ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट पार्ट.
Now next thing is important that when our verb start, जहां से हमारा verb start होती है वहीं से हमारा predicate part start हो जाता है. This is a simple trick of to identify the predicate. Let's take a next example. My sweet grandmother wore a blue dress. So here, who wore a blue dress? किसने blue रंग की dress पहनी थी? Yes, here the subject is here sweet, my sweet grandmother. तो sweet grandmother क्या है बच्चा? यहाँ पर है सब. कोई जब हमको पता चलता है कि कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस किसके बारे में है, सब्जेक्ट हमारी ग्रैंडमदर, माय स्वीट ग्रैंडमदर के बारे में है. तो हियर यू नोटिस दिस इज अ सब्जेक्ट पार्ट, माय स्वीट ग्रैंडमदर. अब देखते हैं हमारी जो ग्रैंडमदर हैं किस क्या करती हैं, किसके बारे में बात हो रही है, उन्होंने क्या किया. यस, वोर अ ब्लू ड्रेस, उन्होंने ब्लू ड्रेस पहन रखी है. सो दिस इज आवर प्रेडिकेट पार्ट. ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट. अब ट्रिक के हिसाब से हम देखते हैं कि जहां से हमारी वर्ब पार्ट स्टार्ट होता है वही पार्ट से एंड तक हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है. ओके तो अब देखिए वर्ब क्या है इन दिस सेंटेंस, वोर. तो वोर इज हियर एज अ वर्ब. सो हमारा जो प्रेडिकेट पार्ट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वोर अ ब्लू ड्रेस. सो स्टूडेंट आई होप यू हैव टू क्लियर दैट द subject and predicate. So when we write a sentence, so you identify the what is subject and what is predicate. Okay, now let's start the exercise related this subject and predicate, so you can better understand from this. Yes, match the subject with the predicate. हमको क्या करना है, subject और predicate से match करना है. So this is understanding, आपके understanding पे है कि आपको सही match up करना है. Okay, the subject is given here also in match A and predicate also given here in match B. So let's start. Crusoe, yes, predicate part is given here. Crusoe can run but cannot fly. No. Crusoe found himself on an island after a shipwreck. Yes, this is a predicate part of a subject, Crusoe. Crusoe found himself on an island after a shipwreck. Clear, student? Second one is here, the kiwi. The kiwi, yes, match the number A. Yes, kiwi. The kiwi can run but cannot fly. कि वो run कर सकती है लेकिन वो fly नहीं कर सकती. Number third is here, my grandfather. My grandfather, yes, match up E, wore his best coat on his birthday. Clear? Number fourth is here, Mercury. Yes, Mercury is the closest planet to the sun. Mercury जो है हमारे जो sun है उसका क्या है, closest planet है. Now, number fifth is here, Mr. Paul. Yes, match up student. Mr. Paul is a geography teacher. So students, so here you notice that here the subject is given and this is the predicate part. In the subject, you notice that the subject tells us about the who or what the subject is doing, who or what the sentence is about. Sentence किसके बारे में है, क्रूसो के बारे में है, कीवी के बारे में है, ग्रैंडमदर, मर्क्यूरी, पॉल, इनके बारे में तो हमारा सेंटेंस है. और जो हमारा जो प्रेडिकेट पार्ट है वो हमको बताता है कि टेल्स द सब्जेक्ट डज. ओके, प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज. प्रेडिकेट हमको बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज आवर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज हियर, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद suitable subject from the books. Yes, books are given here and words are also given here. In words, yes, you notice that is the subjects are also given, so you have to match up, you have to write the correct subject. Okay, so now let's start. Number one, Dash is a capital city of Andhra Pradesh. So here we have options. Yes, the car, Amravati, the earth, the tiger, Fiza. Yes, the correct option is here. Amravati is the capital city of Andhra Pradesh. Next one, Dash is an endangered animal. Yes, Fiza, earth, the tiger, the car, Amravati. Correct answer is here. We use as a subject. The tiger is an endangered animal. Clear, student? Number third is here, Dash broke down in the middle of the road. अब जो road के middle में क्या हो गई क्या? Yes, the earth, the tiger, Fiza, Amravati, or the car. The correct is here, the car broke down in the middle of the road.
Number 4th is here, Dash wrote a poem for her grandmother. किसने अपनी grandmother के लिए poem लिखी? The correct answer is here as a Fiza. Fiza wrote a poem for her grandmother. So suitable subject is here as a Fiza. Now number 5th is here, Dash goes round the sun. अब आपको पता ही है, yes, you all know the student, the earth goes around the sun. So this is the subject, students. You have to write the subject in fill-ups. So now let's start the other activity. Yes, write one sentence for each picture. Your picture are given here, so you have to write one sentence for each picture and circle the subject and underline the predicate. आपको क्या करना है, आपको जो भी sentence लिखना है उसमें आपको subject पे circle करना है और जो predicate part है उस पे आपको underline करना है. So student, let's start. Now picture are given here. Number first picture is here. So here the sentence is here, Mr. Bose, Mrs. Bose, हम Mr. Mrs. हम कुछ भी लिख सकते हैं. Mrs. Bose is reading the newspaper. क्या कर रही है Mrs. Bose? क्या कर रही है? Newspaper read कर रही है. So you notice that you have to identify the subject. Yes, subject is here as a Mrs. Bose. Mrs. Bose क्या है यहाँ पे? As a subject. Why? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Mrs. Bose के बारे में बात कर रहे हैं. So sentence is about Mrs. Bose. So Mrs. Bose is here is as a subject. Now is reading the newspaper. अब Mrs. Bose क्या कर रही है? तो हमको predicate यही बताता है कि the subject does. Subject क्या कर रहा है? Is reading the newspaper. Yes, underline the student, is reading the newspaper. This is our predicate part. So now next image is here, cat. The cat is playing with a ball of wood. जो हमारी जो कैट है वो क्या कर रही है? खेल रही है. किसके साथ? अ बॉल ऑफ वुड. वुड की जो बॉल है उसके साथ खेल रही है. सो हियर द बॉल ऑफ वुल, यहाँ पर हमको एज ए पिक्चर में वुल हो रहा है, तो हियर वी राइट एज अ सेंटेंस, द कैट इज प्लेइंग विद अ बॉल ऑफ वुल. नाउ दो student identify the subject and predicate, so you have to circle the subject. Yes, the subject is what और who the sentence is about. किसके बारे में है sentence? The cat. cat के बारे में sentence है. So the cat is playing with a ball of wool. So cat is here as a subject. Now next is here predicate part. Yes, you know that the predicate tells what the subject does. क्या कर रही है? Subject क्या है? Cat. अब cat क्या कर रही है? Is playing with a ball of wool. तो हमको पता है कि जो predicate जो part है वो क्या कर रहा है, जो subject जो काम करता है वो हमारा predicate part होता है. तो cat खेल रही है एक wool की ball के साथ. तो this is our predicate part. So yes, underline from is playing with the ball of wool. Okay student, clear? आपको clear हो गया subject और predicate. Secondly मैंने आपको एक trick बताई थी कि जब भी हमारा जो भी verb से जो part start होता है वो हमारा and the rest of the जो part होता है वो हमारा predicate part कहलाता है. Now next is here, image are given. Number 3rd, the children are playing cricket in the park. Children यही आपको show हो रहा है image में. The children are playing cricket in the park. So firstly you have to identify the subject, student. Circle the subject. Yes, the children. The children is here as a subject क्योंकि जो बच्चे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पार्क में क्रिकेट कौन खेल रहा है? पार्क में क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं. So the subject is here, the children are playing cricket in the park. So here let's start the predicate part. Predicate part is here, tells about the subject. अब children क्या कर रहे हैं बच्चों? Are playing cricket in the park. This is the predicate part. So underline from this, are playing cricket in the park. Okay student, clear? Number 4, Ramesh is playing the guitar. Okay, you can see the image. आप image देख सकते हैं. उसके अंदर क्या हो रहा है? We can write the name as a Ramesh is playing the guitar. So yes, now identify the subject. Circle the subject, student. Yes, Ramesh. Yes, is playing the guitar. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about as a Ramesh. Yes, Ramesh is here as a subject.
and our predicate part is here. Ramesh क्या कर रहा है? Ramesh is playing the guitar. This is our predicate part. So here underline from this is playing the guitar. Okay student. So is playing the guitar जो हमारा क्या है predicate part trick के according हम देखते हैं तो हमारा जो predicate part कहाँ से start होता है verb से start होता है तो verb is here is playing is here a helping verb playing is here main verb. Okay, so here we use as a verb is playing the guitar. Okay student, so Ramesh as a subject and is playing the guitar is our predicate part. Okay students, so this is the subject and predicate activities. So in the previous class you know very well in the class 4th I told you about the subject and predicate. Yes everybody, have you understood the subject and predicate part? Okay, so now next is here activity in your book. Yes, work with grammar. You have to write a sentence as the okay. So work in pair. Take turn to make sentences and read them out by using these phrases. The phrases are given here. You have to write a sentence as words are given. Red roses, cool afternoon, to watch movie, in the dark room, on the table, and go shopping. Okay, students. Yes, you like that. Red roses. So red roses are blooming in my garden. So you have to write, you have to complete the sentence. Phrases are given here. You have to complete the sentence. After that, you have to write this is a subject and this is a predicate part. Yes, red roses are blooming in my garden. Red roses are as a subject and are blooming in my garden is here as a predicate part. So this is our predicate part. So you have to complete these exercise in your book. आपको complete करनी है book के अंदर exercise. So now let's start the practice of subject and predicate. Now, this is 10 sentences. So you have to know that what is subject and what is predicate in these sentences and circle the subject and underline the predicate. So let's start, student. The horse likes to eat hay. Yes, the horse like to eat hay. Horse को hay means क्या होती है? घास खाना पसंद है. तो here किसको घास खाना पसंद है? किसके बारे में बात हो रही है? The horse. Horse के बारे में बात हो रही है. तो horse is here as our subject. Horse क्या हमारा subject. And predicate parts tells us about the subject. कि what the subject doing. Subject क्या कर रहा है? देखिए, likes to eat hay. यहाँ पर doing तो नहीं हो रहा, लेकिन उसको पसंद है. So this is our predicate part. Said likes to eat hay. Secondly, start from a verb. Our predicate is start from a verb. Yes, verb is here given. Likes to likes is here पसंद करना, तो ये verb है. So here predicate start from likes to eat hay. Okay student. Now next sentence, the students studied hard for the test. Yes, I think everybody has studied hard for the test. आपने अपने टेस्ट के लिए आपने स्टडी करी होगी. Yes, student. Yes, I'm talking about the students in this sentence. So किसके बारे में बात हो रही है? Student के बारे में. The student is here as a subject student. Okay. Now predicate part is here. Studied hard for the test. Student क्या काम कर रहे हैं? क्या काम हो रहा है? वो हमारा predicate part होता है. तो देखिए studied hard for the test. अगर हम as a हमारी verbs देखेंगे, verb से हमारा predicate start होता है. तो studied is here as a verb. So start from there here as studied hard for the test. Now number 3. My mom loves me very much. मेरी मम्मी मुझे ज्यादा प्यार करती है. So here हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? My mom. So जिसके बारे में बात होती है वो subject होता है. So my mom is here as a subject and loves me very much. The verb are given here as the loves. So our predicate apart from the verb loves me very much. So this is our predicate part. Number 4. My dad's cell phone has a funny ring. Yes, my dad's cell phone has a funny ring. So here you notice that my dad's cell phone, this is the phrase. फ्रेज है यहाँ पे. तो किसके बारे में बात हो रही है? माई डैड सेल फोन के बारे में बात हो रही है. तो माई डैड नहीं है ओनली यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है माई डैड सेल फोन हैज अ फनी रिंग. सो हियर यू नोटिस दैट सब्जेक्ट इज हियर. किसके बारे में बात हो रही है? डैड के फोन के बारे में बात हो रही है.
So this is our subject. Okay. Now has हमारा जो predicate start होता है has is given as a helping verb use करी हुई यहाँ पे has a funny ring. So this is our predicate part. Next one. The bee drank the nectar from the flower. So here you notice हम किसके बारे में बात करें? The bee drank the nectar. तो bee drank कर रही है nectar. Yes, हम बात कर रहे हैं bee की. तो bee is our subject. Okay, now let's start the predicate part. Predicate part start होता है हमारा verb से. So drank the nectar from the flower. तो हमारा जो predicate part है bee क्या कर रही है? Second thing हमको तो ये पता ही है कि verb से हमारा predicate part start होता है और secondly हमको ये भी पता है कि predicate tells what the subject does. जो predicate हमको बताता है कि subject क्या है. So here this is a predicate part. Drank the nectar from the flower. Okay, student. Now next, number 6. My parents said that I could get a dog. My parents ने कहा कि I could get a dog. So here this is a predicate part. My parents ने कहा I could get a dog. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसने कहा है कि हमारे पास एक अच्छा कुत्ता हो सकता है? So yes, here the subject is here as a my parents. My parents क्या जिसके बारे में बात हो रही है? As a subject is given my parents. And start from a predicate part, start from a verb. So verb is given said. Okay, so predicate part is here. Said that I could get a dog. Okay, student, don't be confused. Now number 7. My friends and I like to swing at the park. मेरे friends को और मेरे को park में swing करना पसंद है. So here subject is here. My friends and I. Only my friends या I. So okay, so this is the subject part. My friends और I दोनों के बारे में बात हो रही है. तो हमारा जो subject होगा वो my friends और I दोनों ही क्या होंगे? Subject part में आएंगे. Okay, start from the verb. Like to swing the park. Okay, swing at the park. So this is our predicate part. हम क्या करते हैं? Says predicate tells what the subject does. So here you notice that the predicate बता रहा है क्या करते हैं? Like to swing the park. This is our predicate part. Number 8 is here. Muse grew to be very large. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Muse के बारे में. Muse is our subject part. And let's start our predicate parts. Identify. Yes, grew to be very large. So here let's start predicate. Underline the grew to be very large. It's our predicate part. Number 9 is here. Harry and